Assalamu alaikum everyone student. Now today I am going to deliver a lecture about versatile nature of carbon of class 10th subject chemistry and unit 3rd. Today our topic is versatile nature of carbon, that means कार्बन की बाहम ही फितरत. Versatile nature of carbon has four properties. First is catenation, second is tetravalent, third one is tendency to form multiple bonds, and fourth one is isomerism. Now first we discuss catenation property. catenation property है क्या? कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपनी ही लंबी लंबी चेन बनाए, गोल गोल चेन बनाए या ब्रांचेड चेन बनाए, जैसा कि कार्बन शूज कैटेनेशन एंड फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. Carbon attached carbon, that means carbon single bond carbon single bond carbon, and so on. कार्बन को 4 वैलेंसीज है. इन दोनों कार्बन एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. जब पहला कार्बन एटम के साथ दूसरा कार्बन एटम जुड़ता है तो नया कंपाउंड बन सकता है, और इसी तरह दूसरा कार्बन एटम के साथ तीसरा कार्बन एटम जुड़ता है तो नया कंपाउंड बन सकता है, और आगे ये चलता रहता. दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट चेन. अब है ब्रांचेड चेन. ब्रांचेड चेन भी स्ट्रेट चेन की तरह होता, मगर कई पे शाख निकलती हूँ. चाहे पहले ही कार्बन एटम पे ब्रांच निकली या दूसरे कार्बन एटम पे या तीसरे कार्बन एटम पे एंड सो ऑन, या किसी भी कार्बन एटम पे. इन दोनों कार्बन एटमों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है. इसका मतलब मेरा तेरा, तेरा मेरा. ये होगा ब्रांचेड चेन. अब तीसरी चेन है, वो है रिंग चेन. जस्ट लाइक दिस. कार्बन के ऊपर पे भी 2 वैलेंस, यहाँ भी एक होगा 3, साइड में एक होगा 4. दूसरे कार्बन एटम पे भी साइड में 2 वैलेंस, ऊपर एक होगा 3, ये होगा 4. आगे एंड सो ऑन. इसको हम साइक्लिक चेन भी कहते हैं और क्लोज्ड चेन भी कहते हैं. इसके बाद अदर साइक्लिक चेन जस्ट लाइक दिस. इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और हर कार्बन एटम को 4 वैलेंस है. 1 2 3 4. दूसरे को भी 1 2 3 4, और इस कार्बन एटम को भी 4 है. 1 2 3 4. इस कार्बन एटम को भी 4 वैलेंस है. 1 2 3 4. ये होगा अदर साइक्लिक चेन. लास्ट पे होगा
combinations of all these chains just like this. یعنی کہ ساری چینز ہم کو آپس میں ملائیں گے. اس کو ہم کمبینیشنز آف آل دیز چینز کہتے ہیں. اس میں بھی آتا ہے اسٹریٹ چین، برانچڈ چین، رنگ چین اینڈ ادر سائیکلک چین. گویا کہ یہ ہوگا مجموعہ ساری چینز کی. There are more varieties of catenations. Moreover, carbon atoms may be linked by single, double and triple bonds. یعنی کہ کاربن اٹموں کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے. سنگل بانڈ، ڈبل بانڈ اینڈ ٹرپل بانڈس. Just like this, carbon atoms attach to carbon atom in single bonds. Just like this, carbon atom attach to other carbon atom in double bonds. Carbon atom attach to other carbon atom in triple bonds. Again, there is a varieties due to which large number of carbon atoms are formed. آخر پہ اب آپ کو کوئی پوچھے کیٹینیشن کے بارے میں تو آپ کیا کہوں گے؟ کیٹینیشن پراپرٹی. The property is that property. Catenation property is that property of carbon due to which it can attach with more carbons and form by long straight chains, long branched chains, cyclic chains and combinations of all these. This property we call it as catenation. دوسری پراپرٹی ہے ورسٹائل نیچر آف کاربن کی، وہ ہے ٹیٹرا ویلنٹ. ٹیٹرا مینز 4، ویلنٹ مینز ویلنسی. These are 4 valencies usually represented by 4 single lines. First, second, third, 4 ہے نا. یہ جو سنگل لائنز 4 ہیں ان کو ہم ویلنسیز بھی کہتے ہیں. یہ دوسری فارم میں ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یو نو دیٹ کاربن کو 4 ویلنسیز ہوتا ہے. کاربن ایٹم کاربن کے ساتھ ہی جوڑا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں پہ ہائیڈروجن، ہو سکتا ہے کہیں پہ کلورین، ہو سکتا ہے کہیں پہ فلورین. موسٹ آف ٹائم کاربن کو کاربن ہی ملے گا یا کاربن کو ہائیڈروجن ہی ملے گا. کاربن کی 4 ویلنسیز فل کرنے کے لیے یا تو کوئی دوسرا کاربن آتا ہے یا تو ایسے ایلیمنٹس آتے ہیں کلورین، فلورین، ہائیڈروجن، آکسیجن، آیوڈین، سلفر اینڈ سو آن اینڈ سو آن. اس کمپاؤنڈ کی پراپرٹی کو ان سارے ایلیمنٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں. کمپاؤنڈ کے اندر آنے سے کمپاؤنڈ کی پراپرٹی چینج ہو جاتی ہے. اس لیے ان سے بننے والے الگ الگ طرح کی کمبینیشن کو ہم لوگ فنکشنل گروپ کا نام بھی دیتے ہیں. It is second property of versatile nature of carbon. اب ہے کوشچن why is carbon tetravalent? Carbon atom has
4 valencies है ना, 1 2 3 4 in the outermost shell. It needs 4 more electrons to complete its octet. ये octet बनाने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है. Therefore कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसलिए कार्बन टेट्रावेलेंट है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. पहले शेल में 2, सेकेंड शेल में 4, वो हो गया 6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 है ना. होप यू अंडरस्टैंड. इंशाल्लाह tomorrow we shall discuss other 2 properties of versatile nature of carbon. Okay, khuda hafiz. Assalamu alaikum.